So children, in the next one, you dash have shouted at him, he is really upset. मतलब इसमें नहीं करना चाहिए था, it is compulsory, इसलिए आप कौन सा word use करेंगे? shouldn't. Then sixth one, I needn't have reached the party on time, nobody arrived for a long time. So इसमें भी it is needn't, negative is used. needn't you have to means नहीं गए होते तो चलता होता क्योंकि दूसरे कोई आए नहीं थे. Then the next is why didn't you take the metro? It dash have been easy for me to pick you up from the station. अब इसमें कौन सा word आप use करेंगे? would. Then eighth one, it was a good idea to have taken shelter under a tree, otherwise you dash have been drenched. Means इसमें two options are available, you can use any of the one option, that is would या could, दोनों में से कोई भी एक use कर सकते हैं आप. Then the ninth one is you dash have borrowed my book without asking me. इसमें ये compulsory है कि नहीं करना है, तो you will use the word shouldn't. And the next one is would you mind passing the salt please? In this you are using the word would over here because you are asking somebody permission, you are asking, that's why you are using this word would. Now let's move on to the next exercise, that is exercise number C. In this you have to use appropriate models to form sentences suitable for the situation. Now here situation दी गई है, आपको उसके sentences बनाने हैं. Okay, if it is necessary to make question, you can make question, or in a sentence form you can ask. If you are asking something, you are requesting या asking advice or asking any permission, then you will form a question बनाएंगे, नहीं तो फिर you will form a sentence. Now in that first one is already been done for you. Here you have to request someone to move to one side so that you can get off the metro. Means you are asking somebody, so to a stranger you are asking, तो वो आप पहचानते नहीं हो उन्हें, you will start the question with the word could you move to one side please, इसलिए ज़्यादा polite होके आपको पूछना है. Now the second one is like this, advise your younger sibling to brush his teeth daily. अब ये बहुत ज़रूरी है, तो which word you will use? should. तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यू आर गिविंग एडवाइस, यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे. नाउ नेक्स्ट अगेन किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, योर रिक्वेस्ट योर मदर टू साइन योर डायरी. सो रिक्वेस्ट करना है मम्मी को, तो थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा. सो हाउ विल द सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म? कुड यू प्लीज साइन माई डायरी? देन नेक्स्ट अगेन रिक्वेस्ट योर टीचर टू रिपीट वॉट शी सेड. So teacher also you should be more polite, so you will ask a question like this, could you please repeat what you said miss? Now in the D exercise you have to tick the correct models. Here the words are given, functions are given over here, according to the function you have to tick the correct option. Now here first one possibility है, सो पॉसिबिलिटी के लिए तो कौन सा वर्ड आप यूज़ करेंगे? शैल तो नहीं यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ द वर्ड माइट. आई एक्सप्लेन्ड यू इन द रूल्स में, मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी के लिए शैल नहीं यूज़ होता है, शैल यूज़ होता है खाली ऑफ़र और सजेशन के लिए. सो कौन सा आंसर है? माइट. देन द सेकेंड वन, इनफॉर्मल वे ऑफ़र आप कर रहे हैं, इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, सो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कैन. देन नेक्स्ट वन, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दैट फर्स्ट ऑप्शन इज़ पॉसिबिलिटी. ये जो पॉसिबिलिटी के लिए फर्स्ट में पॉसिबिलिटी के लिए अगेन कौन सा आप लेंगे? माइट. एंड सेकेंड में ऑफ़र है, सो ऑफ़र के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? शैल. शैल आई टोल्ड कि ऑफ़र और सजेशन के लिए यूज़ होता है. देन फोर्थ वन, अगेन सजेशन इज़ गिवन, बट इन दैट सजेशन यू आर आस्किंग समबडी, जैसे अक्षय को आप पूछ रहे हेल्प यू विथ द डिज़ाइन आइडियाज़, तो ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा, तो यू विल यूज़ द वर्ड कुड. नाउ फिफ्थ वन, अगेन नेक्स्ट इज़ अबाउट पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में शैल नॉट तो यूज़ नहीं होगा, सो यू हैव टू यूज़ द वर्ड मे नॉट. एंड द लास्ट वन, यू आर ऑफरिंग समथिंग, you are offering somebody, so you will use the word
कैन, और माइट तो उसमें नहीं यूज़ होता है, माइट फॉर फ्यूचर यू आर यूजिंग दिस वर्ड, इसीलिए विच इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कैन. Now let's move on to the E exercise. In that, what you have to do? You are on a train with your family. Write down what you would say in this situation. Again यहाँ पे situations दी गई है, आपको sentence form करना है. In that first one किया हुआ है आपके लिए. You want to drink some juice. What would you say to your mother? को क्या बोलेंगे? Could I have some juice please? Then the second one, you notice that another child has some comic book with him. किसी और के पास एक comic book है. You have to ask him to lend you one. एक पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप कैसे उसको question पूछेंगे? Can I look at one comic book? Now you do not know how to fasten the sleeping berth. Ask your father to teach you. अब पापा को बोलना है कि आपको सिखाए. So how you will ask the question? Papa, can you please show me how to fasten the sleeping berth? ऐसे आपको question model verb लगा के बनाना है. Then fourth one दिया है, you want a vegetarian lunch, ask the vendor. vendor को आपको बोलना है कि आपको vegetarian lunch चाहिए, तो more polite होके आप बोलोगे I would like to have a vegetarian meal please. आप sentence में बोलोगे उसको कि मुझे vegetarian meal चाहिए. And the last one is, you want to go to the washroom, request the passenger next to you to make room for you to pass. यहाँ room मतलब जगह बनाए. So short में you can ask him कि could I please pass, वहाँ से जाना है तो वो automatically दूर हो जाएंगे. Then the next one is, now in the F exercise यहाँ दो pairs दिए हुए हैं sentence के लिए. So जो sentence you have to tick the sentence which is more polite, ज़्यादा politeness हो जिसमें, वो sentence आपको टिक करना है. ऑटोमेटिकली इन दिस could से ज़्यादा politeness होती है, तो ये टिक किया हुआ है. Then next is given, I am afraid the line is busy, can you please hold on, and कि will you hold on, यहाँ please ज़्यादा politeness दिखा रहा है, so that is the correct sentence. So ये ज़्यादा politeness दिखा रहा है, so this is the correct sentence, उसको टिक करना है. इसमें भी can और may में से may is more polite, so you will take this sentence. Then in this it is given, could you answer the door या would you mind answering the door, ये ज़्यादा politeness it is showing, तो this is the correct answer. Then fifth one, what would you like me to do for you, what can I do for you, ये ज़्यादा politeness नहीं बताता है, this one is the correct one. Then sixth में again could आ गया, means more politeness, that is the correct one. And then next again here could is there, more politeness दिखा रहा है, that is the correct one. And इसमें may is showing more politeness, so this is the correct answer. Now in the next exercise, dear children, complete the second sentence using can, can't, could, couldn't, so that it means the same as the first. मतलब first के जैसा ही आपको वो sentence में meaning नहीं change करना है, बस खाली bracket का word लेके आपको उसको ज़्यादा politely you have to show using this 4 words. जैसे first it is given over here, it is been done, you have changed, stand is given, तो I couldn't stand boarding school. Now here couldn't stand, you will add it over here. Then the second one, it is given over here, I have forgotten everything I ever learnt there. You have to just use the word remember and write the sentence again. So I can't remember what I learnt there. Now here when it is used, present tense use हुआ है तो आप can लगा के करेंगे, and जब past tense words आते हैं sentence में you will use the word could. जैसे यहाँ hated आ गया तो you नहीं कर सकते, तो couldn't play, past tense use हुआ है इस वजह से. Here also past tense is there, was not, so you will use could hardly, means कर सकते हो, तो could hardly करके this word जो bracket में दिया है वो इसके साथ joint करना है. Then next one, here it is given would also past tense है, तो here you will use couldn't believe. Then next, here it is given, fortunately it is possible to go to university at any age now. Now you दिया हुआ है तो fortunately you could, ये politeness you have to show, so you are using the word you could to university
go to university at any age now. Then the next one, seventh one, here it is given, I eventually realized that I was actually capable of success in academic studies. Now success का succeed here you have to change. So how the sentence की कर सकते हैं, I eventually realized that I can succeed means जो हो रहा है आप कर सकते हो. So you will use the word can succeed in academic studies. Then eighth one, when I realized that I might be able to help them financially, I was delighted. So you have to use the word support with that. So when I realized that could support, I was over the moon. Now this way you have to use these words. Now let's move on to the H exercise. Here options are given to you. According to the sentence, you have to choose the correct option and form the sentence. In this, the second one, first is already been done. Second one, when someone gives you something, you dash thank them. Now it is compulsory, so you will use the word should लगा के आप sentence बनाएंगे. Now the third one is ought to. अब ought to में what you are using, advice or probability. तो ये we dash get going now if we expect to reach home on time. अब ये ज़रूरी है. So you are giving somebody advice, so you will use the word ought to. Then fourth one is Anil dash overcome his fear of public speaking if he wants to be a good debater. Now in this it is compulsory, so has to you have to use. Then you dash कॉल योर पेरेंट्स इमीडिएटली, ये बहुत ही ज़रूरी है. सो कुड नहीं आएगा, आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है, मस्ट. दे आर वेरी वरीड. देन सिक्स्थ वन इज द प्रीफेक्ट्स डैश कैन ऑलवेज कैरी देयर बैगेट्स विद देम. अब इसमें भी इट इज़ वेरी कंपल्सरी, सो यू विल यूज़ द वर्ड मस्ट. देन द सेवेंथ वन इज यू डैश गो टू द स्कूल ऑफिस विदाउट डिले. अब ये ought to जाना चाहिए मीन्स आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं दैट टाइम. देन द बैट्समैन डैश स्कोर अ लॉट्स ऑफ रन, ये ज़रूरी है तो हैव टू. एंड ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वी डैश हैव इनफ टाइम टू गेट टू द स्टेशन. सो वी माइट नॉट, ये नहीं होगा शायद, ऐसे वो बोल रहे हैं, तो यू हैव टू यूज़ द वर्ड माइट नॉट. देन टेंथ वन इज इफ़ वी डोंट लीव बिफोर 10 वी डैश मिस द ट्रेन. ये प्रेडिक्शन है कि शायद ऐसा हो सकता है अगर नहीं टाइम पे निकले तो. एंड दिस हियर इट इज़ कंपल्शन इज देयर, सो इट मस्ट बी लवली इन दार्जिलिंग एट दिस टाइम ऑफ द मीन्स इट इज़ देयर ओनली, इट इज़ कंपल्सरी, तो यू विल यूज़ द वर्ड मस्ट. देन ट्वेल्थ वन, यू डैश स्क्रीम दैट लाइक दैट इट्स आई एम राइट हियर. नाउ इन दिस ये नहीं करना चाहिए, सो यू विल यूज़ द वर्ड shouldn't. Then the 13th one, नीता dash be careful and not keeping her things lying around. अब ये should ज़रूरी है कि careful होना चाहिए, so you are using the word should. If you hadn't phoned me last night, I dash have remembered to bring your book. So in this couldn't or shouldn't means it is very compulsion, but here politeness is there, you have to use the word couldn't over here. And the last one, they dash have been here by now, मतलब वो होने ही चाहिए, compulsion है, so you have to use the word should over here. So dear children, today till here I have explained you have to complete this exercise in your textbook with a pencil. So I hope you would have understood this chapter. Please go through the video and complete your textbook. Thank you.